Yes, good morning students. How are you? कैसे हो आप लोग? So in yesterday video we discussed about the monovalent electropositive ion, divalent electropositive ion, trivalent electropositive ion. I have told full list. I have told almost all the elements. After that, I told about the monovalent electronegative ion, divalent electronegative ion. So, I was discussing about the divalent electronegative ion. So, after that, we will start making formula. Okay. So, today's topic's name is formula making. Formula making. Okay, students. In formula making, we were discussing about the divalent electronegative ions कि किस किस पे -2 चार्ज होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हायर क्लासेस ऑल्सो स्टूडेंट्स. दिस इज द फाउंडेशन. ये आपकी नींव है. इफ योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग विल गो स्ट्रॉन्ग इन केमिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स. So I starts with the first oxide. Oxide, its symbol is O. Oxide O. And students, oxide for oxygen. लास्ट में IDE होता है. आइड, लाइक दैट सल्फाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड. इट मीन्स यू टू राइट इट्स सिंबल ओनली. सो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? यहां पे आईडी आ गया, ऑक्साइड आ गया, ओ. और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है ऊपर पुट कर दो. तो उसका कितना होता है? 2-. तो यहां पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स 2- चार्ज ऑक्साइड. नाउ आई विल टॉक अबाउट द सल्फाइड. तो दिस इज सल्फाइड. और सल्फाइड का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स, सल्फर का S होता है, वैलेंसी 2-. तो हियर यू कैन राइट 2 नेगेटिव. दिस इज फॉर सल्फाइड. ऑक्साइड, सेकेंड इज सल्फाइड. आफ्टर दैट डाइक्रोमेट. Like that potassium dichromate. So dichromate, this is for higher class, but you can also learn dichromate. And symbol for dichromate is Cr2O7. Cr2O7, and here 2 negative charge. This is for dichromate. Oxide, sulfide, dichromate, Cr2O7, 2 negative charge. After that, sulfate, Sulphate, sulfate. For the sulfate, SO4 and valency 2-. This is for sulfate. After sulfate, I'll talk about sulfate, and then sulfite.
sulfite. So there is difference between sulfate and sulfite. If sulfate is there, then SO4. If sulfite is there, then SO3. Valency 2 minus. Valency for sulfide also 2 minus. For the sulfate also 2 minus. For the sulfite also 2 minus. So these are the for sulfide, sulfate, sulfite, oxide, dichromate. After that, students, chromate. CHROMATE, chromate. Chromate. This is also divalent electronegative ion, students. Like that dichromate was there. That time you use Cr2O7. Now chromate is there. Chromate. That was dichromate. This is only chromate. For the chromate, we have got symbol for that MnO4 and 2 negative charge. So you can write 2 minus. This is for chromate. After that, students, oxalate, OXALATE, oxalate. For oxalate, you write COO and then close in bracket, and here twice because two times, because this is C2O4. You can write C2O4 also. You can write in this way also, C2 here O4, and then you can write here -2. This is for oxalate. After oxalate, you can see, students, zincate. Very important. Zincate, ZINCATE, zincate. And for the zincate, you can write ZnO2, like that sodium zincate, like that any zincate, potassium zincate. So for zincate, you write ZnO2 for zincate, and valency is 2 minus. Okay, students. So this was about the divalent electronegative ions. And now next we will see here trivalent. So now it's turn for trivalent electronegative ions. Trivalent electronegative ions means, students, जिनकी वैलेंसी 3 minus में हो. Okay, so we have got some like that: nitride, 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 and last is IDE. So symbol for its element. तो एलिमेंट्स नाइट्रोजन है, स्टूडेंट्स यहाँ पे, और नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो N होता है, और इसकी वैलेंसी, स्टूडेंट्स, 3 होती है. सो 3 नेगेटिव. दिस इज फॉर नाइट्राइड. आफ्टर दैट, स्टूडेंट्स, एल्यूमिनेट, ALUMINATE, एल्यूमिनेट. This is aluminate, students. What is this? Aluminate. This is aluminate. And aluminate symbol is AlO3. Zincate was ZnO2. Aluminate is AlO3. AlO3 having 3 negative charge. So nitride, aluminate. After that, phosphide. So students, here phosphide is there, last ID is there, like this nitride ID is there, phosphide IDE.
तो फॉर यू टू राइट द सिंबल फॉर फॉस्फोरस। तो स्टूडेंट्स फॉस्फोरस का जो सिंबल होता है दैट इज पी, वो होता है फॉस्फोरस का सिंबल पी, और इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 3 नेगेटिव। ओके, आफ्टर फॉस्फाइड you can write phosphate, and students phosphate, this is PO4 phosphate. Okay, PO4 means phosphate, and here valency phosphate 3 negative, phosphide valency P3 negative, and this phosphate PO4 3 negative, and finally phosphite is also there. Phosphite, this is PO3 phosphite and negative 3 valency. So these are trivalent electronegative ions. So students, we have discussed about the divalent, monovalent, trivalent and trivalent electronegative ions. And now students, it is turn to make the formula. So without wasting your time, I will start how to make formula. You are waiting for that, जिसका आपको इंतज़ार है लंबे समय से। आप सोच रहे होंगे कि सर कब फॉर्मूला बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग आई हैव टू टोल्ड बिफोर स्टार्टिंग formula making topic, and this all the things that we have done we have to use while we make the formula. Okay students, तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही शानदार और बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री का एक बेस्ट पोर्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, अपन करेंगे आज बहुत सारे फॉर्मूले। तो फॉर्मूला मेकिंग। तो स्टूडेंट्स, नाउ मेन टॉपिक इज formula, because we are writing so many compounds formula, that's why it is formulae. E will add this. So let's start with very simple. First we'll start simple, very simple, like that. First is sodium chloride. You are given sodium chloride and you want to make it formula. How you will make it? First of students, here sodium is written, so you have to write symbol for sodium. सोडियम का सिंबल लिख लो, दैट इज Na. वो सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? Na होता है सोडियम का सिंबल। हमने सिंबल लिख दिया Na। कि स्टूडेंट्स क्लोराइड तो Cl होता है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे Cl क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इट्स वैलेंसी। अब इसके डाउन में स्टूडेंट्स आप वैलेंसी लिख दो या चार्ज लिख दो, एक ही बात है। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1, लेकिन हमें प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है। यू टू राइट ओनली वैलेंसी। सो यहाँ पे +1 है, बट आई एम राइटिंग 1। और स्टूडेंट्स, क्लोरीन की वैलेंसी भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, दैट इज ऑल्सो -1, बट यू विल राइट हियर 1। So here students 1 is there both, so here 1 and here 1. So you can do cross multiply like this way, and then in this way. So you will get NaCl. So this NaCl is formula for sodium chloride. Understood students? आपकी समझ में आ गया ना?
चलिए अब हम सेकंड फॉर्मूला लेते हैं। नाउ वी विल ट्राई फॉर द सेकंड वन स्टूडेंट्स। So here I have written question number 2. Now I will take sodium oxide, sodium oxide। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने सोडियम ऑक्साइड लिया है और सोडियम का सिंबल तो आप जानते हो, दैट इज Na। और स्टूडेंट्स ऑक्साइड लास्ट में आईडी आ गया है, तो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल वो होता है O। आई हैव रिटन हियर O। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आई राइट इट्स वैलेंसी। अब इनकी वैलेंसी लिखूंगा। तो सोडियम की वैलेंसी आपकी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, लेकिन में प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, खाली आप तो वैलेंसी लिख दो। तो हियर आई एम राइटिंग 2। तो स्टूडेंट्स मैंने O के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे 2 वैलेंसी लिखी, सोडियम के नीचे मैंने 1 वैलेंसी लिखी। एंड नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको ऐसे करूँगा। नाउ आई विल गेट Na2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Na2 और O बन जा O, दैट इज O। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड, दैट इज Na2O। एंड यहाँ पे NaCl, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? गुड। एंड नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट इज, and that is sodium hydroxide, sodium hydroxide, sodium hydroxide। symbol for sodium we know it is Na, and symbol for hydroxide it is OH, hydroxide। valency for sodium you know, that is +1, but I'll write O। valency for OH -1, but I'll write only 1। and if 1 is there, no need to cross multiplication, but for making your habit up I am doing it। okay students, so it is NaOH। so this is the formula for sodium hydroxide। after that students, next formula number 4। here I am taking now sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, this I am taking। so students, sodium symbol and bicarbonate, this formula you must know। so sodium, yes students, you have in practice so many times, this is Na। bicarbonate means hydrogen carbonate, and hydrogen carbonate HCO3, this is for hydrogen carbonate। hydrogen carbonate means HCO3 or bicarbonate you can say। valency for this you can now take। so valency for bicarbonate here 1, and this also 1। so here also you will get same thing। so formula is NaHCO3। so this is formula for sodium bicarbonate, NaHCO3। so this is the 4th one। and now students we will see 5th one। now we will leave sodium and we will take now magnesium। like students, magnesium oxide,
So here symbol for magnesium Mg and symbol for oxide is O. Valency for magnesium 2, valency for this oxygen oxide, this also 2, because here +2 and here -2, so no need to show this +2 and no minus. So students, now you can cancel it. Here only 2 to 2 is cancelled. Here you will get 1 1, and by cross multiplication you will get its formula MgO. This is magnesium oxide. Okay students, now we will take formula number 6, that is magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide. So here students, symbol for magnesium Mg, symbol for hydroxide OH. Valency for magnesium 2, valency for hydroxide 1, and if you do the cross multiplication, then here what product you will get it MgOH. So if two atoms are there, if two elements are there, you have to write in bracket, then OH in bracket, and these two you have to write in the twice. So MgOH whole twice. Magnesium hydroxide is known as milk of magnesia. Milk of magnesia, इसको स्टूडेंट्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और ये एक एंटासिड होता है, ये एंटी एसिड होता है, एसिड के एंटी में काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल, दैट फॉर्मूला नंबर 7, magnesium carbonate. Magnesium carbonate. Here magnesium symbol, you know, this is Mg. Carbonate symbol is CO3. So here magnesium, here carbonate. So magnesium valency, you know, valency of magnesium is 2. Valency of carbonate is, you know, that is 2. Valency of carbonate is 2. Bicarbonate 1, but carbonate 2. So if you cut it, you can cut it, and here you will have MgCO3. This is magnesium carbonate formula. Next students, like that magnesium bromide. Magnesium bromide. So students, magnesium bromide, if you take, symbol for magnesium Mg, symbol for bromide Br. Valency of magnesium 2, valency of bromine here 1. By cross multiplication you will have what? MgBr2. MgBr2. So this is formula for magnesium bromide. Now students, you can take now aluminium oxide.
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, सिंबल फॉर एल्यूमिनियम Al, symbol for oxide O, valency for aluminium 3, valency for oxygen is 2, and if you do the cross multiplication, then you will get what? You will get Al2 and O3. So this is aluminium oxide. And next students, we will have another formula. Aluminium you can take bicarbonate, aluminium bicarbonate. Symbol for aluminium is Al, bicarbonate, hydrogen carbonate, that HCO3, valency for aluminium 3, valency for bicarbonate is 1. If you do the cross multiplication, you will have Al SCO3 in bracket, and after that you have to write here 3. So this is formula for aluminium bicarbonate. Next students, you can take calcium hydroxide, So now calcium, symbol for calcium is Ca, hydroxide for OH, valency for calcium is 2, valency for hydroxide is 1. If you will do the cross multiplication, you will have CaOH whole twice, calcium hydroxide. Okay students, and next you can take another example. Next is calcium carbonate, symbol for calcium Ca, carbonate symbol CO3, valency for calcium 2, valency for this carbonate 2, and students 2 same, you can cancel out, and you will have here CaCO3. This is for calcium carbonate, this is for calcium CaCO3, calcium carbonate. So today we have discussed a lot, and now I am giving some homework. At home you practice for these 5 compounds. So here this is for your homework. Here number 1, first sodium phosphate, second magnesium hydride, third calcium bicarbonate, calcium bicarbo, bicarbonate, fourth
एल्यूमिनियम फॉस्फेट, फिफ्थ सोडियम acetate. So these 5 questions you have to do in homework. Okay students, so today this is enough for you. So thank you, have a nice day.